Namaskar. Since me and my colleague founded HW News Network, there are very few occasions where a current affair, a news clipping moved me emotionally. Yesterday was one such day. This clip that I'm going to discuss with you, it moved me emotionally. It moved me emotionally and forced me to ask myself, are we a fair society? Have we built our country as the Constitution wanted us to build ourselves? That's my question today. Let's get right into the show. The story here is of a lady whose husband, I guess, was put behind bars from 2019. I don't know what the crime was. I don't know whether what he did was wrong, right, otherwise, whose fault it was. All that I don't know. But this is a lady who's in the court pleading to the judge for her husband who is in jail since 2019. I want you to watch this 4 minutes clipping. Please do watch. And I will come back to you. सर, मैं बनारस से आती हूँ और 2019 से सर केस चल रहा है, ना बेल पे सुनवाई हुई है और ना ही सीआरए क्या बोलते हैं, हमें बोलने पे नहीं आ रहा सर, हमें बहुत डर लग रहा है आप लोगों के सामने। डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बोलिए जी। तो 180 नंबर फाइनल हियरिंग पे है सर। तो फाइनल हियरिंग जब लेंगे तब फिर सर उसको अपन ले सकते हैं। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, बहुत हिम्मत जुटा के मैं आपके सामने आई हूँ। और सर आप हमको एक डेट दे दीजिए। और मैं दौड़ते दौड़ते सर मैं एकदम थक गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अंदर हैं और आपके वकील साहब नहीं है? वो दिल्ली है सर, उनको बुलाने के लिए हमको डेट तो फिक्स होना चाहिए, बुलाऊंगी तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है सर। और 2000 सर, एक मिनट सर, 2023 में सर मेरा एक लौता बच्चा था, कोर्ट में दौड़ते दौड़ते 23 साल का था, यहीं पे आके एक्सपायर हो गया सर, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। रिक्वेस्ट है आप सब लोग यहाँ पे सबके पास बच्चे होंगे, मेरा एक लौता संतान। लोकल काउंसिल एंगेज कर लीजिए, जो रिक्वेस्ट करे, जिस दिन फाइनल हियरिंग टेकअप होती है ना जी, उस दिन रिक्वेस्ट करे तो आपका केस ले लेंगे आउट ऑफ टर्म। और अभी मोशन हियरिंग छोड़ के फाइनल हियरिंग नहीं ले सकते। तो सर हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी लेके आए इसीलिए सर कि हमको सुन लिया जाए। तो सुनने को तैयार है, प्रोवाइडेड जी, तो आप हमको सर एक डेट दे दीजिए। वकील नहीं डेट देंगे, वकील साहब नहीं आएंगे तो क्या फायदा? नहीं तो सर हम उनको बुलाएंगे। लोकल काउंसिल आप रखिए, यहाँ के जबलपुर के लर्नेड काउंसिल को एंगेज करिए, वो बहस करेंगे। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों पर हो जाएगा। अब दिल्ली से बुलाएंगे, एक हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे वो? नहीं सर, हम कहने का मतलब है सर कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी लेके आए हैं तो उसको भी तो आप लोग नहीं तो इसलिए तो सुनने को तैयार है ना हम तो लोग। जी सर हमको यहाँ से डेट फिक्स मिला था 16 दिसंबर का, मैं वहां से वकील को भी लेके आई, आपके सामने रिक्वेस्ट भी किए, फिर भी वो चले गए, आप लोग नहीं सुने या जो भी था। तो फिर मैं सर बहुत हिम्मत जुटा के आई हूँ सर, हमको खाली हाथ मत लौटाइए, हमको एक 16 का डेट दे दीजिए या सर 23 का डेट दीजिए कि मैं उनको बुला सकूं और अब हमारी बहस हो सके यहाँ पे। सर मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, प्लीज सर। 180 एक क्रिमिनल अपील है, इसमें 5 केसेस है, इसकी सुनवाई अलग अलग नहीं हो सकती। तो सर हम बताइए, हम कब तक सबको तो मैं नहीं जानती किसको बुला के कहाँ से लेके आए, हमको तो सुन लीजिए सर। मैं क्यों सजा भुगतूं अकेले, मैं कब तक सफर करूं सर, नहीं हो पा रहा है मुझसे, मेरा कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास सर, और आप लोगों के सिवा मैं किसके पास जाऊं। मेरी पीड़ा को समझिए सर, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इतना सफर कर सकूं, हमने सब कुछ खोया है सर, प्लीज हमारे ऊपर दया कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है प्लीज सर। और यहाँ तक अपने बच्चे का हमने दाह संस्कार तो कर दिया, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिससे बुरी स्थिति माँ बाप 80 नंबर पे है और इससे पहले वाले सब इससे पुराने केसेस हैं। 1995, 93 ये जो आपका जी मैम। 180वें नंबर पे केस है और इससे पहले वाले सब इससे पुराने केसेस हैं। अच्छा,
तो मैम आप तो लोग सीरियल वाइज चलते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है सर तो काउंसिल आकर के रिक्वेस्ट कर लें, हम पांचों को बुलाने की कोशिश करेंगे। डिसाइड पांचों एक साथ ही होंगी, अलग जी अलग जजमेंट, चूंकि जजमेंट एक ही था। जी सर जी मैम पांचों वकील भी एक साथ ही जी जजमेंट होंगे, तो मैम आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है मैम, हम अपने वकील को बुलाएंगे, वो दिल्ली से ही आएंगे और यहाँ मैं ऑनलाइन छोटा बात कर लेंगे, वो जिस दिन भी, अभी कल बात कर लें। कल तो आप ठीक है बात कर लें, फिर डेट देखते हैं अगर सर कोई डेट ऐसी 23 और है इस जिसमें तारीख का आप हमको डेट दे दीजिए, मैं ये वकील को डेट बुलाऊं। फाइनल हियरिंग की नहीं है, ये डेट सबको इकट्ठा करने और सबको समझा करके ये कहने की कि हाँ एक दिन कोई तय कर ली जाए जी सबकी मैम कन्वीनियंस से, जिस दिन बहस हो जाए। जी मैम तो इसके ये लिए एक रास्ता। 95 आज पे उनको क्या करें, उनको छोड़ दें। एक नंबर पे जो 95 पे लगा है जी उसका नंबर नहीं आ रहा है। 1995 तो सर आप लोग उसको समझिए, मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आता है, प्लीज मेरी पीड़ा को मैं नॉर्मल हूँ, मुझे यहाँ की कोई विधि पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, मैं बस अपनी बात रख सकती हूँ, अपनी पीड़ा बता सकती लोकल हूँ। काउंसिल एंगेज करिए, दिल्ली वाले नहीं करा पाएंगे, यहाँ पे हो सकता है हफ्ता भर रुकना पड़े। तो कोई गारंटी नहीं है हमारी फाइनल हियरिंग कब चालू होगी। जिस दिन होती है उस दिन एक भी नहीं रहते यहाँ पे। एक नहीं रहता, हाँ, एक नहीं रहते। तो मैम हमको मैं तो बता दीजिए कि मैं लोकल काउंसिल लगाइए, वो रोज आके देखेंगे। जिस दिन अच्छा फाइनल हियरिंग शुरू होगा जी उस तो दिन आपका केस ले लिया जाएगा। आप बता दिया आपको सब चीज, आप इससे ज्यादा क्या करेंगे। अभी कुछ फिक्स नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको खुद को नहीं मालूम कब नंबर आएगा आपका या कब फाइनल हियरिंग लेंगे। This woman is in front of this judge with folded hands. With folded hands. Mind you, the judge sits there because he's been given that constitutional authority. Not that he is something, he's a bigger citizen than this lady who's folded hands and standing in front of him. The judge is not a bigger citizen or more senior citizen or more valuable citizen of this country than this woman who is standing with folded hands. The judge is doing his constitutional job, and that lady is asking him for his to deliver his constitutional responsibilities. This is the situation. So this lady is standing with folded hands saying that I am very scared when I am standing in front of you because my husband is in jail since 2019. Now, like I said before, I don't know what her husband did. I don't know whether husband is culprit. I don't know whether the husband is not culprit. I don't know whether the husband is innocent. I don't know all of that. But she is standing asking the judge that, listen, you know what? My husband is in the jail and I have been coming here. I have been given dates after dates after dates. And I am not able to get my lawyer is because my lawyer comes from Delhi and I am not able to afford to get my lawyer here because khatam ho gaya, money is over. I cannot get my lawyer here. I am pleading you, she says, give me a date. Give me a date. She further on goes to say that her 23-year-old son died coming in and out of from where they are, Delhi to Jabalpur, and trying to get dates for his father. He died, he passed away. She with folded hands says that I have nobody on earth to look after me. I'm all alone, and that is why I gathered the courage and I'm standing in front of you. For 2 minutes she couldn't speak because she was scared. And yeah, I mean, she was overwhelmed. There's a judge sitting there. I am not blaming the judge, or I'm not blaming this that court. Nah, maybe they have their protocols to follow. They are following the protocols. I am asking this question to the society. My question number 1 is, would that lady stand in front of a judge with folded hands had she been rich? Think of any billionaires, millionaires, whose wife do you think would have stood in front of that judge with folded hands saying that please give me a date? A rich would never have to do that in this country, but a poor has to. How fair are we? How fair are we? Is our society fair? My question number 1. My question number 2, what kind of justice? What kind of justice
where a woman who doesn't have money, therefore can't pay the lawyer, lost her son, doesn't have enough money to come to Jabalpur to fight that case, and she may not get justice because she couldn't fight the case. She's been given dates after dates. What kind of justice is this? Why such justice? Is this justice at all? I am sure the courts are following its protocol. I am sure the courts are following the rules. I am sure the courts are following the way it is supposed to be done. But then if a lady of that age, if she has to stand and beg in front of the judge, are laws made for men or men made for laws? Why can't we change such laws? We seem to be changing laws from Indian Penal Code to Bharat Nyaya Sanhita and all every day. But why are you not ensuring that a lady doesn't need to stand in front of a judge like the way this lady is and pleading? Why can't we create laws? Why can't we change protocols? Why can't we change the way the court works? Like I said, I don't blame the judge nor that court. I blame the system. This video came to light. There might be thousands of women like this going and with folded hands in front of the judge and saying that please help me. I don't have money. I don't have people to help me. And the judge said, listen, jab date aayega, tab aayega. You hire a local advocate here. The point is, this happens often. This happens often. I am not saying this. An honorable judge, an honorable retired Supreme Court judge had said this. I spoke about this to you yesterday. I will repeat what he said. He said that the system usually went into a tizzy if a rich person was put behind bars. Applications for his bail and expediting his trial were filed repeatedly in superior courts. His case was heard at the cost of delaying the case of the poor litigant. The poor too had a right to life and dignity. The judiciary needs to hear and help him. This is the example. This is exactly what he was talking about. At the cost of this poor lady, the rich will get their trials. The rich will get their dates fast. I'm not saying this. A judge is saying it. If the system feels, if the judiciary feels it's wrong, then question this judge. It's a Supreme Court retired judge who is saying this. And I am just showing you an example of that poor person who does not get trial, who does not get that date. I'm just showing you that poor person. I'm just trying to connect the two and show you, look, this is exactly what's happening in our legal justice system. What is our legal justice system doing? What is our administration doing? What is our governance doing? What is our law ministry doing? You are trying to punish people. At least first change the way the system works so that justice is doled out right. So that the poor and the rich has the same right on justice. It's not just words. I will end my editorial by reading us our constitution, our preamble. Our preamble says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. Which of this, justice, liberty, equality, fraternity, which of this are we actually practicing? Which of this is an actual practice? Like I said, today, it's more of an emotional editorial for me. It may not throw facts and figures at you, but the point that I'm trying to make is
If this is what our law is, what kind of society are we talking about? If a poor has to plead and for a rich, the law goes tizzy, as the Honorable Justice puts. Kya law? Think about it till I see you tomorrow. That's at 10 p.m. Namaskar. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.